everyone, welcome to my YouTube channel Cbse Courses with Veeti. Today we are going to continue with the chemistry chapter 4, class 10, carbon and its compounds. We learned about what is carbon, different organic compounds that are carbon, functional groups, how to do the naming according to IUPAC. Now, at this point, we are going to learn about isomers. So in this particular video, we are going to learn and discuss more and more about isomers, and I'll help you to understand this topic more clearly and easily. So let's get started. I'm just going to start with the definition first, because as much as I believe that definition should be clear to you all, because in exams they can ask you to define, ask you to give examples, and your concept should be clear. Okay, so the organic compounds basically I'm trying to tell about carbon and the compounds made with carbon, hydrogen or oxygen, okay, with same molecular formula. It is written molecular here, with same molecular formula but different physical and chemical properties. Now this is what we are not able to understand. Same molecular formula means what? Let me try to give you example. If here I am writing C6H14, so here it is also C6H14. This C6H14 means carbon is 6, here also carbon is 6. Hydrogen here is 14, here also hydrogen is 14. Means they both have same molecular formula. Okay, what is the molecular formula here? CnH2n plus 2. यही molecular formula, n refers to the number of carbon, so C6H 2 6 are 12 plus 2 14. This is your molecular formula. So they both are same, C6H14, C6H14 here, right? They both are C6H14. No difference. Number of carbon is same, number of hydrogen is also same, but their physical and chemical properties are not same. So now the question rises that when it is also C6H14, here I am taking an example of C6H14 to be particular, okay. You'll see that this is also C6H14, this is also C6H14. When they both are made up of same number of carbon, same number of hydrogens, so how it is possible that they will have different physical and chemical properties? And to be honest, you have a point. Even when I started learning, I was like, they both are same. So what's the key point here that make them different? Right, यही तो आता है ना question, that what's the difference between the two that makes it different? So this is a big one. इसको हम अभी example की तरह explain करेंगे. But before that, I am going to take a small example that can make us solve the questions more easily. C5H12. एक यहाँ C5H12, एक यहाँ C5H12. Now I am saying कि ये दोनों एक दूसरे के isomers. Isomers are what? That they both have same molecular formula but different physical and chemical properties. I am saying that this is also C5H12. This is also C5H12. Actually, you know what? Let me just. This is also C5H12 and this is also C5H12. And they all are isomers, means they all have, these three have different physical and chemical properties, and they all are C5H12. Now you will say how, what's the key point where that different is. तो पहले मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूं उससे पहले I want you to write a formula.
Please write it down, it will be very useful for you all. Okay, yeah, so this is the formula. Okay, now what you'll say, ask me that what's this formula is all about. Let me just tell you. When they are asking you, जैसे मैं यहाँ पे आपको यही नंबर दिया मैंने, C5H12 मैंने दिया, and I am asking to tell me कि इसके कितने आइसोमर्स होंगे. Let's say that I gave you a compound naming C5H12 or known as pentane. Now my question is to you that how many isomers do this pentane have? मतलब ऐसे कितने और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है जिनका फॉर्मूला C5H12 है, but they have different physical and chemical properties. So to find that out, in case of alkane, जब alkane का पूछे जैसे C5H12, so you will use this formula 2n minus 4 plus 1. In these cases, n is equals to number of carbon. ठीक है. Similarly, in alkene means there are double bond है, जैसे pentene C5H10, जिसे तो पता चल ही गया होगा. So like in the case of alkene, अगर odd है, odd क्या, this n, अगर number of carbon odd है, जैसे number of carbon is 5, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, इस तरह से है. So you will use this formula easily. 2n minus 2 मतलब नंबर ऑफ कार्बन में से 2 माइनस करना, फिर उस एक्सपोनेंट को एज अ पावर ऑफ 2 लेके यू विल गेट द आंसर. अगर इवन है, इफ योर n इज इवन लाइक 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, तो यू विल यूज दिस फॉर्मूला. Clear? Please write down this formula. It is very useful and it will give you a guide. Okay, it will guide you throughout this topic isomers. So I am rubbing this first. N is what? Number of carbons. So let's check for this C5H12. एक alkane है C5H12. The number of carbon is 5. So 2, 5 minus 4 plus 1. तो 2 में से 4 गया तो 1. तो 2 as it is क्योंकि 2 की power 1 है तो 2 ही होगा. Plus 1 is equals to 3. Means this C5H12 had 3 isomers. इसीलिए I do remember कि इसके 3 isomers होते हैं, इसलिए मैंने यहाँ 3 लिए थे. मतलब आप समझ लो कि मैंने C5H12 के सारे आइसोमर्स एक साथ रखे. तो आइसोमर पता चल गया. एल्केन हैज 3 आइसोमर्स, मतलब सॉरी पेंटेन हैज दिस C5H12, दिस पेंटेन हैज 3 आइसोमर्स. मतलब ये पेंटेन 3 ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में प्रेजेंट है जिनका C5H12 भी है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, राइट, बट दे हैव डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. दैट्स व्हाई मैंने 3 लिए थे. Now rubbing this off, I hope you have written the formula. If not, just play the video from 10 seconds before, you will get it. So C5H12, 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 3 isomers, same molecular formula, डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. एंड मैंने बता दिया कि मैंने फॉर्मूला यूज किया जिससे मुझे पता चला कि C5H12 के 3 आइसोमर्स है. कुछ में होता है कि उनके आइसोमर्स ही नहीं होते, कुछ में होता है 6 आइसोमर्स होते हैं, कुछ में होता है 10 आइसोमर्स होते हैं. सो दैट डिपेंड्स, बट इन दिस केस इसके 3 आइसोमर्स है. अब कैसे, हाउ, व्हाई दीज आर आइसोमर्स, तो पहले ड्रॉ कर लेते हैं C5H12 कैसे होता है ड्रॉ. तो बेसिक 1, 2, 3, 4, 5 and completing the valency with hydrogen. H, 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 H. So this is your basic pentane, right? C5H12. अब इसी में क्या होता है, इनका स्ट्रक्चर मैं बदल दूंगी. When there is a change in the structure,
their physical and chemical properties changes. Means अगर isomers है, isomers मैंने कैसे याद किया था? The way I learned it was कि isomers mean different structures, same molecular formula but different structures, and I made a theory that due to these different structures it has different physical and chemical properties, and to a certain extent that's right as well. Means कि to the certain extent इसका आप देखो ना, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, मैं चेंज क्या करने वाली हूँ, सिर्फ इसका ये स्ट्रक्चर, और मैं बोल रही हूँ कि इसका फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जा रहा है, तो आई कैन रिलेट कि इसी स्ट्रक्चर के चेंज की वजह से ये चेंज हो रहा है. तो दैट्स हाउ यू कैन रिमेम्बर. आइसोमर्स मीन हर बार आपको पता लगाना है कि इसके कितने आइसोमर्स है. लाइक मैंने इसका पता लगाया दैट C5H12 है 3 आइसोमर्स. नाउ यू हैव टू लर्न कि 3 अलग अलग तरीके से स्ट्रक्चर कैसे बनाओ जो कि सही हो. सिर्फ ड्राइंग नहीं करनी, यू डोंट जस्ट हैव टू स्क्रिबल एनीथिंग, यू हैव टू ड्रॉ समथिंग विच इज करेक्ट. ओके, तो लेट मी जस्ट ड्रॉ. इसमें मैं क्या करूंगी, 1 2 3 4 5 and then hydrogen, 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 hydrogen. तो ये हो गया मेरा एक और. This is my another isomer C5H12. Now मैं अभी से सारे डाउट्स क्लियर करती चलती हूँ. Some students ask me that how did I got to know कि ये यहीं आएगा, ये यहाँ भी तो आ सकता था, यहाँ भी तो आ सकता था. This is a common question. तो पहली बात, always remember, ये जो मैंने ये किया ना, ये जो चीज है ये, this is known as branching. Remember, this is what? This is branching. So never do branching on first and last carbon. मतलब ये जो चेन लगाइए, ये ना कभी इस फर्स्ट वाले पे लगाना है ना कभी लास्ट वाले पे लगाना है. क्लियर व्हाट आई एम सेइंग? आई होप इट इज क्लियर. मैंने कहा कि ये जो ब्रांचिंग की है ना, इसको फर्स्ट पे लगाना है ना लास्ट पे लगाना है. मीन्स you can't put this chain on this carbon or on this carbon. ये रूल है. अब you will say why? लगाई दिए तब भी तो स्ट्रक्चर बदल जाएगा. And you will argue me with that. ऐसे 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 करके ऐसे मैंने बना दिया तो स्ट्रक्चर तो बदल गया, ब्रांचिंग आ गई. But this is game is all about the counting. अगर मैं ऐसे इसको काउंट करूंगी तो क्या आएगा, 1 2 3 4 5. You will say कि ऐसे भी तो 5 ही आ रहा है. Now let me tell you how. अभी नेमिंग करेंगे so you will understand. But ये तो याद रख लो बिना reasons के, just remember it in your minds that you will never do the branching on the first or the last anywhere. And this is just use it as mantra. कुछ केसेस होंगे, वो फंक्शनल ग्रुप वाले केसेस अलग होते हैं जिसमें हमें लगाना होता है. मैं यहाँ आइसोमर्स की बात कर रही हूँ. In isomers, you will never ever do the branching on the first or the last carbon. If you want to score nice, you have to remember it. So please do remember. Okay? Now, इसकी नेमिंग भी थोड़ी अलग तरीके से होती है, तो मैं नेमिंग पे सीधे आती हूँ. That will make your point clear. इसका नाम तो सीधे पेंटेन होगा, तो मैं इसको लिखूंगी N pentane. You will say why this N pentane? So N stands for normal pentane. Okay, normal pentane. अब इसका नाम मैं रखूंगी isopentane. Isopentane. Why isopentane? क्योंकि मैंने सिर्फ एक ब्रांचिंग किया. Iso means single branching. Iso means single branching, मतलब सिर्फ एक ब्रांचिंग की है. इसका लेकिन एक और नाम है. It have one more name. Tell me if you know. Okay, you must not know because ये first time you are going to learn. So हम इसका नेमिंग कुछ अलग तरीके से करते हैं. What I'll do is I'll do the counting. 1 2 3 4. You will say why 4? Why not 5? तो अब 5 क्यों नहीं किया, इसका बात सुनो. ये ऐसे आप
यू हैव सीन द एड्स, यूट्यूब एड्स, जिसमें वो बोलते हैं कि एक ही बार में पेंसिल को बिना उठाए पूरा स्ट्रक्चर कंप्लीट करा, एंड इट सीम्स टू बी इम्पॉसिबल। तो यहाँ पे अगर मैं ऐसे काउंट करूंगी 1 2 3, तो इन दोनों का कोई कनेक्शन है? इफ आई डू इट लाइक 1 2 3, तो मैं यहाँ 4 5 पे कैसे आऊंगी? कोई चेन कनेक्टेड नहीं है ना, हमें यहाँ चेन कनेक्टेड पे काउंट करना है। इफ आई डू काउंटिंग फ्रॉम हियर, सो 1 2 3 4, अगेन एक बच गया। अगर मैं यहाँ से काउंटिंग करूँ तो 1 2 3 4, अगेन एक बच गया। तो इसका मतलब क्या है? सीधी सीधी बात की जाए तो जस्ट काउंट इट इन अ स्ट्रेट वे, ब्रांचिंग को छोड़ के। तो 1 2 3 4, एक स्ट्रेट लाइन में कितने कार्बन है? 4 कार्बन है। They have single bond, so I will first name it as butane. You will say what? Butane is wrong. It is a pentane. It is C5H12. ये isomer ही नहीं रहा. So relax. I'm going to tell you what to do next. अब 1 2 3 4 के बाद you will do what? You will name कि ये ब्रांचिंग आपने कहाँ की है. You will say ब्रांचिंग कहाँ की, क्या मतलब है? ब्रांचिंग कर दी है मैंने जहां मन किया मेरा. So no, I'll name it. How? ये जो काउंटिंग केस में देखो 1 2, सेकेंड वाले पे, ये सेकेंड वाले पे ब्रांचिंग की है, राइट? इसका नेम थोड़ा सा उधर करना चाहिए, स्पेस तभी रहेगा। लेट मी जस्ट डू दैट। ब्यूटेन तो लिख दिया था, इसकी ब्रांचिंग कहाँ की है? 1 2, सेकेंड वाले पे। तो मैं इसकी पोजीशन पहले लिखूंगी 2, फिर मैं इसको लिखूंगी मिथाइल, 2 methyl butane. This is your 2 methyl butane. Something while you listen it once, it seems like, oh my god, why is this? It's something advanced type of thing. But you see how we together name this isomer. क्या क्या मैंने एक बार मैं फिर से explain करती हूँ, because this concept at this particular point is hard. I know, I accept the fact, but if you learn it once, you're never gonna forget it. यहाँ पे एक चेन में जितने कार्बन है उसको काउंट करो, ब्रांचिंग भूल जाओ, फॉरगेट द ब्रांचिंग। और एक पॉइंट याद रखो, यू विल नेवर डू द ब्रांचिंग ऑन द फर्स्ट और द लास्ट कार्बन। तो ब्रांचिंग भूल जाओ, सीधे काउंटिंग करो, कितने कार्बन है? 1 2 3 4, 4 मीन्स ब्यूट। नाउ चेक, सिंगल बॉन्ड है कार्बन के बीच, तो एन ब्यूट एन, ब्यूटेन एज इट इज लिख दिया। नाउ यू विल टेल मी द पोजिशन ऑफ द ब्रांचिंग, कि आपने जो पोजिशनिंग की है उसका, ये सॉरी, ये जो आपने ब्रांच लगाया है उसकी पोजीशन क्या है? यू विल टेल मी। सो जो किसी को मैं बोल रही हूँ कि ये 2 मिथाइल, ये आइसोपेंटेन बनाओ, उनको पता चलेगा कि कहाँ से आपने कार्बन निकाला, कहाँ से। सो फॉर द एक्यूरेसी ये हम पोजिशनिंग इसकी बताएंगे। तो मैंने ब्रांचिंग की है 1 2, सेकेंड वाले पे, तो आई विल राइट इट एज 2, and I will do put the comma here and write methyl. Now methyl क्यों लिखा? Tell me what is this? Methane, ये मीथेन है, CH4 मीथेन है, ठीक है। अब ऐसा हमने एक होता है ग्रुप जिसमें सिर्फ 3, एक हाइड्रोजन जब मैं रिमूव करके कोई भी X लगा दूं तो हम इसको मिथाइल कहते हैं। मिथाइल कह लो या एल्काइल ग्रुप कह लो। दिस इज एल्काइल ग्रुप। जैसे मिथेन में से मैंने एक हाइड्रोजन हटा दिया, इथेन में से एक हाइड्रोजन हटा दिया, सो दे फॉल इनटू दिस एल्काइल ग्रुप। जैसे एल्केन एल्कीन एल्काइन था ना, वैसे ही चौथा ग्रुप है एल्काइल। मतलब जितने हाइड्रोजन थे इसमें से आपने एक हाइड्रोजन को हटा के कोई भी एलिमेंट लगा दिया, एनी एलिमेंट। जैसे यहाँ पे आप देखो 1 2 3, चौथा वाला हटा के यहाँ कार्बन लगाया हुआ है। यू कैन से इट एज लाइक दैट, राइट? सो दिस इज योर मिथाइल. So I wrote it as 2 methyl because ये मिथाइल है, ब्यूटेन। Now the positioning के लिए बच्चे कंफ्यूज होते हैं। They say me कि हम इसको ऐसे भी तो काउंट कर सकते थे 1 2 3, अब मैं ये भी तो कह सकती थी कि ये थर्ड पे लगा है, राइट? यू विल से कि इधर से काउंट किया 2 आया, बट इफ आई काउंट इट फ्रॉम दिस साइड आई विल से दैट 1 2 3 थर्ड वाले पे लग रहा है। That's what you will also say. I hope so.
दैट वाज माय क्वेश्चन। कह सकते हो ना कि ये इस तरह से लाइक 1 2 3, ये थर्ड वाले में फॉलो रहा है, सो आई विल नॉट से दैट। व्हाई आई विल नॉट से इट? टेल मी। If you know, if you don't know, so obviously we are here to learn only. So we'll not see it like that because we'll always count the position from the nearest to the branching। अब इतनी बड़ी लाइन का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब छोटा सा था। द थिंग आई वांटेड टू से इज कि आपको देखना है जो मिथाइल लगाए इधर से जो भी तरफ क्लोजेस्ट है वहां से आप काउंटिंग करोगे। जैसे इधर देखो और इधर देखो, इधर सिर्फ एक कार्बन है, इधर 2 कार्बन है, तो नियरर कौन सा पड़ा? टर्मिनेशन से आपको क्लोजर कौन सा? टर्मिनेशन मतलब ये यहाँ से खत्म हो रहा है, यहाँ पे भी खत्म है, तो इधर दोनों साइड से आपको जिस साइड से क्लोज ज्यादा पड़े है मिथाइल वहां से आपको काउंट करना है। दैट इज द क्वेश्चन। ओके, तो इधर से 2 कार्बन है, इधर 1 कार्बन, तो ऑब्वियसली इधर से काउंट करोगे तो ये ज्यादा नियर पड़ रहा है। जस्ट से दिस इज हियर इन द मिड, हियर लाइक दिस। ओके, ये यहाँ है मेरा पेन। बताओ, मैं बोलूं कि आप इसका नियर बोर्ड से इसका नियरेस्ट डिस्टेंस काउंट करो, मेजर करो, तो नियरेस्ट कौन सा है? ये नियरेस्ट है या ये नियरेस्ट है? ऑब्वियसली दिस वन इज द नियरेस्ट पार्ट। इन द सेम केस यहाँ कार्बन से ये नियरेस्ट है या ये नियरेस्ट है? ऑब्वियसली ये नियरेस्ट है, तो यू विल स्टार्ट द काउंटिंग फ्रॉम हियर। और जब यहाँ से काउंटिंग करोगे तो 2 ही आएगा पोजीशन, 1 2 2 मिथाइल ब्यूटेन, 1 2 2 मिथाइल ब्यूटेन। मतलब आपको याद रखना है दैट यू विल ऑलवेज हैव टू काउंट द पोजीशन फ्रॉम द नियरेस्ट पॉइंट। अगर ये यहाँ है, बताओ इस बोर्ड से नियरेस्ट कौन से साइड से पड़ रहा है वो मेजर करो। मैं बोलूँ कि आपको ये बोर्ड के एजेस से मेजर करके बताना है किस साइड से ये नियरेस्ट पड़ रहा है, वो आपको मेजर करना है। तो आप इस साइड से मेजर करोगे, ये तो देखिए पता चल रहा है दिस इज वेरी फार, दिस इज अ स्मॉल डिस्टेंस, आप इधर से काउंटिंग मेजरमेंट कर लोगे। इतना एग्जाम्पल देने का द मेन मोटो वाज टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट यू विल हैव टू काउंट फॉर द पोजीशन ऑफ दिस ब्रांचिंग जहां से नियर पड़े। तो 2 आइसोमर्स तो बना लिए। दिस क्वेश्चन कैन कम फॉर 3 मार्क्स और आपने 2 मार्क्स के लिए सॉल्व कर दिया है। नाउ थर्ड मार्क्स C5H12। बहुत से स्टूडेंट्स टेल मी व्हाट, ऐसे बना के हाइड्रोजन फिल करके बोलेंगे कि ओके वी मेड अ न्यू वन। सो नो, यू मेड अ फूल ऑफ योरसेल्फ इफ यू आर डूइंग दिस, बिकॉज अभी मैंने बताया कि ये 2 मिथाइल ब्यूटेन है, इसका नाम क्या होगा? ये भी ब्यूटेन हो जाएगा पहली बात तो। 1 2 3 4, इसका पोजीशन क्या होगा? 1 2 2 मिथाइल। दे आर द सेम ब्रो, दे आर द सेम। ओके, कुछ बच्चे बोलेंगे अच्छा ठीक है यहाँ से हटाया, यहाँ लगा दिया, अगेन इट इज सेम 1 2, क्योंकि मैं क्या कर रही हूँ, मैं तो नियरेस्ट से काउंट कर रही हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। अगर मैं नियरेस्ट से काउंट कर रही हूँ फिर से 2 मिथाइल ब्यूटेन आ रहा है, यू आर डूइंग इट रॉन्ग। सिर्फ देखने में नहीं होना चाहिए कि ओके ये देखने में तो लेकिन डिफरेंट है। अगर मैं इसको यहाँ लगा दूं सो यू विल सी कि देखने में तो डिफरेंट लग रहा है, बट देखने से डिफरेंस नहीं होना चाहिए, इन एक्चुअल इट शुड बी डिफरेंट। और इधर से मैं काउंट करूँ तो 1 2 नियरेस्ट 2 ही पड़ रहा है, तो ये फिर से 2 मिथाइल ब्यूटेन हो जाएगा, मतलब ये नहीं हो सकता। ओके, आई नो दिस मे बी कंफ्यूजिंग राइट नाउ बट soon you will able to understand। तो you will say that अब कैसे बनाए? एक हम बनाएंगे नियो पेंटेन, और अब आप मुझे नेमिंग बताना। ओके, नियो पेंटेन क्या होगा? मतलब यहाँ इस तरह का स्ट्रक्चर, मीन्स इस एक कार्बन का चारों वैलेंसी कार्बन ही से फिल होगा। दिस इज अ सुपर मिंजा टेक्निक, रिमेम्बर। बेसिक अगर आपको आइसोमर बनाना है, अगर 6 भी आइसोमर्स बनाने कह दिया ना,
सबसे पहले तो आपको ये नॉर्मल बनाना है जो आप बनाते आए हो, फिर एक को ब्रांचिंग करके दिखाना है, फिर ऐसा नियो वाला बना देना है, और उसके बाद आपको देखना है अगर आपके फॉर्मूले से यू आर गेटिंग दैट यू हैव टू ड्रॉ 6 आइसोमर्स, तो फिर देखना है कि ब्रांचिंग कुछ चेंज हो सकती है, 2 मिथाइल से 3 मिथाइल, 4 मिथाइल, किसी केस में हो सकता है, वो हम अभी प्रैक्टिस करेंगे। बट फॉर नाउ ये याद रखो, एन पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन, मैंने पेंटेन के ही इससे याद किया था बेसिक स्टेप्स, तो अब इसकी वैलेंसी बस कंप्लीट कर देनी है आपको। Let me just complete the valency. So this is your neopentane. Now tell me its name. IUPAC name, International Union of Pure and Applied Chemistry. IUPAC full form? International Union of Pure and Applied Chemistry. So now tell me its IUPAC name. Okay, let me help you with this. पहले एक चेन वाले कार्बन काउंट करो, जैसे यहाँ क्या क्या था 1 2 3 4, एक चेन वाले। यहाँ क्या क्या था 1 2 3 4 5, एक चेन। वैसे 1 2 3, 3 के लिए व्हाट यू विल से मेथ, एथ, प्रॉप। अब सिंगल बॉन्ड ही है, तो आई विल राइट प्रोपेन। अब इसमें यू हैव 2 ब्रांचिंग, यहाँ तो सिंगल ब्रांचिंग थी, यहाँ डबल ब्रांचिंग है तो ये मिथाइल ही, तो लिख दिया मिथाइल। बट ये 2 हैं तो मैं इसको लिखूंगी डाई मिथाइल। दिस डाई रेफर्स टू कि 2 मिथाइल है। ये 2 क्योंकि ये तो पोजीशन बताने के लिए, तो मैं ये कैसे बताऊंगी कि यहाँ 2 है। हाउ आई विल टेल यू, मैंने कैसे बताया, डाई मिथाइल वर्ड यूज करके, डाई मिथाइल। अगर यहाँ 3 मिथाइल होंगे, इस यहाँ पे भी एक मिथाइल निकला होता, तो मैं इसको नेम देती ट्राई मिथाइल, and you keep on going, but most probably you will go till this dimethyl। तो dimethyl इन 2 ब्रांचिंग का मैंने लिख दिया, मैंने ये सिंगल चेन वाले को प्रोपेन लिख दिया। अब आई एम लेफ्ट विद द पोजिशनिंग। पोजिशनिंग कैसे करूंगी, नियरेस्ट से काउंट, तो इसमें तो आप दोनों साइड से काउंट करो, एक ही पड़ रहा है सेकेंड, तो आई विल राइट 2 2। यू विल से कि व्हाई आई राइट 2 2 टाइम्स, क्योंकि 2 मिथाइल है, तो पहले लेट्स से कि मैंने इस मिथाइल की पोजीशन 2 लिखी, अब ये वाला मिथाइल भी 2 पे, तो फिर मैंने इस वाले मिथाइल की भी पोजीशन 2 लिखी है। अगर आप यहाँ डाई मिथाइल लगा रहे हो, मीन्स आपको दोनों मिथाइल की पोजीशनिंग बतानी है। इवन इफ अगर वो दोनों एक ही सेकेंड नंबर पे ही लगे हैं, तब भी आपको 2 बार 2 लिखना है, बट यू हैव टू राइट इट लाइक दिस, ओके। क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है ना कि यहाँ पे ज्यादा होते और बाय एनी चांस एक ही पे ना लगाओ, विल सी दैट इफ पॉसिबल, बट द मेन मोटो वाज दैट यू हैव टू मेंशन द पोजीशनिंग ऑफ बोथ ऑफ दिस, इवन इफ वो एक ही कार्बन पे लगे हैं, तब भी आपको पोजीशनिंग बतानी है। Do this as an example in your notebook so that you can just go through it when you are reading up your notes, so it will be easier for you to understand or recapitulate the topic, ठीक है। Rubbing this off, and we are gonna end it with the big one example, okay। We are going to end it with a big example. In the beginning I gave you it, मैं यहाँ formula लिख देती हूँ, tell me how many isomers will it have, tell me the number of isomers for hexane, छोटे छोटे से लिख दिया। I am giving you few minutes. N means number of carbon if you don't remember. So 6 minus 4 2, 2 raised to the power 2 4,
4 plus 1 5 मीन्स हमें इसके 5 आइसोमर्स ड्रॉ करना है. तो पहला आइसोमर कौन सा होगा? एन हेक्सेन. एन हेक्सेन मीन्स सिंपल वाला जैसे हमें आता है. 3 4 5 6. नाउ कंप्लीटिंग दी वैलेंसी. ये वाला तो सब ड्रॉ कर सकते हैं. फॉलो द स्टेप्स जो मैंने अभी बताया. तो हो गया. सेकेंड स्टेप क्या बताया था? आइसो. आइसो हेक्सेन. हम इसका आईयूपीएसी नेम भी लिखेंगे. ओके, बिकॉज यू मस्ट नो. तो आइसो मीन्स 5 रखोगे. 1 2 3 4 5. और फिर एक कहीं से भी ब्रांचिंग निकाल दोगे. लेट्स सी यहाँ से मैंने ब्रांचिंग निकाल दी. सो नाउ कंप्लीटिंग द वैलेंसी. Just give me few minutes. I'm trying to do it as soon as possible. You know what? Keep doing it with me so it will be settled in your mind. Isohexane. Iso मतलब क्या मैंने बताया था? Just a single branching. Now tell me the IUPAC name. I hope you were able to do. How will you do? एक चेन के कार्बन काउंट करो. 1 2 3 4 5. 5 means pentane. Well, good. Then एक सिंगल चेन है, ब्रांचिंग है, तो मिथाइल. नो डाई मिथाइल क्योंकि एक ही है मिथाइल. नाउ इसकी पोजिशनिंग बतानी है. हाउ विल यू डू द पोजिशनिंग काउंटिंग? टेल मी द पोजिशन. So I told you कि ब्रांचिंग की पोजीशन काउंटेड फ्रॉम द नियरेस्ट वन. नियरेस्ट कौन सा है? नियरेस्ट तो ये वाला है. तो हेयर से अगर मैं यहाँ से काउंटिंग करूँ तो 1 2 2 ही पे है, राइट. इधर से काउंट करूंगी तो 1 2 3 4 आ जाएगा. बट दैट इज रॉन्ग. You can't do 4 methyl, right? You have to do the counting from this side only. So 1 2 methyl pentane is the IUPAC name for this. How will you get it? You will check the positioning. First thing is your positioning. 1 2 second number carbon pair. Then this branching is what? Methyl. And if you count it like this in a chain, so 1 2 3 4 5. 5 carbon means pentane. Why pentane? Because it all have single bond only. If it have double bond, then it will be known as pentene. But here it is single bond, so we'll name it as pentane. And isohexane, or you can say 2-methyl pentane in a more correct way. We drew 2 isomers. Now let us draw the third isomer. I told you the steps, that first draw the normal one, then the iso, and third one is neo. Neo means what? 1 2 3 4 5 6. 1 carbon surrounded by all the carbon. This is what we mean by neo. कि एक कार्बन की वैलेंसी you have to complete with the carbons only. Now फटाफट we'll do completing the valency. We'll complete the valency and this is how your neohexane looks like. Neohexane. 1 2 3 4 5 6. 6 carbon and 14 hydrogen. And what is its one more name? IUPAC name. IUPAC name के लिए we'll do the counting of carbon in a single chain. So 1 2 3 and 4. 4 stands for bute. And it have the single bond obviously, so we'll write butane. We have 2 methyl branching.
2-methyl branching means dimethyl. As we have discussed already, 2-methyl, there are 2 methyls here, and then I'll refer it as dimethyl, where di refers to 2-methyl. 2-methyl, so dimethyl. Now the positioning. Obviously, we'll do it from the nearest point. इधर से तो दूर है ना. From here it's the nearest, right? So 1, 2. 2, 2, dimethyl butane. Okay? This is your third isomer. Now let us do the fourth isomer. Now let us do for fourth isomer. What I'll do is, ये यहाँ से अगर यहाँ कर दूं, so will it change anything? I told you what. पहले draw the normal one, then the iso. Third one is neo. Fourth step was to check the iso one, that can you brought one more new isomer from that one. So if I remove this methyl from here, let me just draw it. मैंने सेकेंड पे लगाया था, मैं लगाऊंगी 1, 2, 3, 4, 5 इस पे लगाया एंड कंप्लीटिंग द वैलेंसी. तो इसका नेम क्या होगा? 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 3, 3 methyl pentane. Okay, let's just draw it and check it. Okay. So it's IUPAC name. इसका कोई normal name नहीं है. Only the IUPAC name. So IUPAC name will be what? Position 1, 2, 3. इसमें तो आप किसी भी साइड से काउंट करो. You are going to get 3 only. 1, 2, 3, 1, 2, 3. तो हो गया 3 methyl. 3 methyl. 1, 2, 3, 4, 5. How many in a single chain? 1, 2, 3, 4, 5. 5 stands for pent. 3 methyl pentane. 3 methyl pentane is the fourth isomer. Now we'll draw the last and the fifth isomer for our hexane. So how will we draw the fifth isomer is the question here. मैंने आइसो का पोजीशन चेक करके I drew one isomer. अब मैं क्या करूंगी? I'll check the positioning of this new hexane and try to get a new one. 3, 4, 5. तो 5 वाले के लिए मैं क्या करती हूँ? पहले तो 1, 2, 3, 4. 4 as it is, so it will name butane. Now I'll change the positioning here. 2, 2 था, I'll make it 2, 3. 2, 2 था, I'll make it 2, 3. Now you will say, why not 3, 3? You can say me, right? So but 3, 3 is not possible, because अगर मैं यहाँ लगाऊंगी तब भी 1, 2 ही होगा. If I draw it here, तब भी 1, 2 ही होगा. So 3, 3 dimethyl is not possible, because we have a golden rule that says that we have to do the counting for the positioning from the nearest to the branching. Branching के nearest से we have to do the counting for the position. So I'll do 2, 3. 2, 3 तो हो जाएगा. मैं इधर से काउंट करूंगी तो 1, 2, 3. इधर से भी काउंट करूंगी तो 1, 2, 3. 2, 3 आ जाएगा. So if you do it like this also, that doesn't make any difference. Positioning is the main thing. So name, filling the valency. I think all the valency is completed. Okay, now 1, let me just use the red pen so it is more visible. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. तो मैं चाहे यहाँ से काउंटिंग करूँ
या यहाँ से करूँ, आ रहा है 2 3. So just write 2 3. The positioning 2 methyl, so methyl butane is the answer here. Got it? 2,3-dimethyl butane is the fifth isomer. With this, we learned today what are the isomers, few formulas to get how many isomers we can obtain of a alkane or alkene. Then we did an example for hexane. And I hope with this example, it is crystal clear to all of you to how to draw the isomers. You just have to remember the steps I have told you in the video. You have to consider the formula I gave you, and then I hope you will be able to do the questions related to the isomers. And don't forget to remember the definition. Isomers are the organic compounds having the same molecular formula but different physical and chemical properties. With this, we are done in this video. I hope you like it. If you do, so do like, subscribe and share my channel. Also, don't forget to ring the bell hang button so you will get all the notifications of my channel. Next video will be out soon. Till then, stay tuned and thank you for watching it till the end. Subscribe to my channel.